Good morning, children. Now let's start our next exercise 11.3. This exercise is based on algebraic expression. Okay, so first I am going to explain you arithmetic expression. What is the arithmetic expression? When you are using some operator in between of the digit like plus, multiply, see this is the arithmetic expression. This is also arithmetic expression. Okay, now we will talk about algebraic expression. What is a algebraic? In algebraic expression it is a must variable should be there. वहाँ पे क्या होना चाहिए? Variable होना चाहिए. Okay, so you can see here the one example 2x plus 1. So here this one variable it is x. So we can say this is a expression. This is a algebraic expression. Okay, now let's start our exercise 11.3. What is it? Make a 4 expression with the 3 number 2, 6, 5. No variable it is there. It means you have to make a arithmetic expression. आपको arithmetic expression बनाना है. Okay, using each of the only ones addition, subtraction and multiplication. For expression it is a need and use only these 3 operation addition, subtraction, multiplication. Write that here I am writing any arithmetic operation you can write it. 2 plus 6 minus 5. Second, 2 multiplied by 6 plus 5. Third, 5 multiplied 6 minus 2. 4. मैं कैसे भी क्रिएट कर रही हूँ, इनके बीच में बस ऑपरेशन लगाना है. नाउ एडिशन 2 plus 6 multiplied by 5. So understand now how to make this question. Do yourself this type of the questions. This is a self-test question. So you can create more arithmetic expression. Now next question. Which of the following are algebraic expression? Algebraic means variable it should be there. So this is the z. So this one is also algebraic expression. Here this is the arithmetic expression. This is also algebraic expression. यहाँ पे नहीं है कोई भी वेरिएबल, यहाँ है. सो ACE आर द algebraic expression. Now question number 3, what is it? Write the statement how the following expression have been found. यानी इनका स्टेटमेंट में लिखना है. z minus 2. How can you write in a statement? z और 2 subtract from 2 कहाँ से subtract हो रहा है? This is the 2. Okay. 2 subtract from z. That statement you have to write it. Now 21 y. When you will see a multiply by b, multiply it is represent to time. इसको multiply को multiply भी बोलते हैं word में और time भी बोलते हैं. So 21 multiply by y, ये भी लिख सकते हैं 21 multiply by y and add to half. After getting the result, then add to half. You can see it is very easy na to make a statement same as minus 17 multiply by y. So minus 17 टाइम y, ये भी लिख सकते हैं अपन. 3 and 2 का क्या लिखेंगे? 2 subtracted from 3n. 2 is subtract हो रहा है किससे? 3n से, from 3n. Now this one how can you write it? 2 time m and the sum of 10 and n. 2 time m add 2 time m add आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 time m add with the sum of 10 and n. So जो भी अपने पास में algebraic expression है, how can you convert into statement? No need to copy with answer from your backside. You know how can you convert it easily. z minus 2 ये भी लिखोगे वो भी correct है. 21 multiply by y add by 1 by 2. So create yourself the word statement according to the given algebraic expression. No need to copy with the answer sheet. Now question number 4. Give expression for the following cases. And one more thing, it is not necessary कि मेरे ये सारे स्टेटमेंट पीछे से मैच होंगे.
तुम लोग भी जैसे मेरे मैच नहीं हो रहे, बट इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो ट्राई टू योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन स्टेटमेंट, बट इट शुड बी करेक्ट, कि लगना चाहिए कि स्टेटमेंट से यही रिजल्ट निकल के आ रहा है. Now give expression for the following. And now we will make an expression just opposite statement it is given. Now we will make this expression. 3 added, देखो 3 added आ गया ना. 3 added twice p यानी 2p. Twice p means 2p. 10 subtracted from half of p. Half of p मतलब half of p यानी p by 2. इज इट क्लियर? हाफ ऑफ पी, पहले इसको सॉल्व कर लो. हाफ ऑफ पी मतलब हाफ लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई पी, सो पी बाई 2. नाउ पी बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा 10, सो दैट इज द एक्सप्रेशन. सी 2p मल्टीप्लाइड बाय सम of 7 and 9. 2p is multiplied by the sum of 7 and n. इन दोनों का सम ऑफ हो रहा है, इट मीन 7 plus n. 6 added to thrice of x and divided by y. 6 added to thrice of x and divided by 4. After that whatever the answer it is coming, that divided by 4. and मतलब यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, ये पूरा सॉल्व होने के बाद में डिवाइडेड बाय 4 करना है. m मल्टीप्लाई बाय -6, m मल्टीप्लाई बाय -6 एंड देन उसके बाद में क्या करना है, 3 इज़ एडिड टू द रिजल्ट, यानी ये जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 एडिड हो गया. ओके अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे? -6m वी कैन राइट इट -6m + 3. इफ़ यू राइटिंग हियर सम, जैसे 3 और x लिखा है. 3x मतलब क्या होता है? 3 टाइम x होता है. 3 टाइम x, इनके बीच में कुछ भी ऑपरेशन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. From an expression using x and 7 using only one number operation. From an expression, एक expression बनाना है और one operation use करना है. So x plus 7. From an expression p3 4 use only 2 different number of operation, यानी प्लस और माइनस यूज़ कर लेते हैं. p plus 3 -4, या फिर और ले सकते हैं p multiply by 3 plus 4. You can create so on. These are the questions. So we want only the one, so I am writing here the one. So do this work in your notebook within good handwriting and try to yourself without cheating any answer. Thank you.